The countdown for PSLV C56 DSR has been 25 and a half hours long, during which a concert of activities are carried out for the readiness of range, launch vehicle, spacecraft, and downrange tracking stations. The liquid propellants are serviced to the launch vehicle stages in the last T-10 hours or more. The onboard batteries are charged and the gas bottles filled with gases for stage functioning are pressurized. The meteorology section obtains and records critical data for committing the launch minus and day 18 of minutes. launch wind biasing of the launch vehicle. This is Vehicle Director to Mission Director. All the system parameters of PSLV C56 launch vehicle are normal and within specifications. The launch vehicle is ready for PSLV C56 DSR mission. Mission Director Roger. अभी अभी यान निदेशक ने यान के परीक्षण के पश्चात यान की जानकारी मिशन डायरेक्टर को दी है। यह पूर्णतः संतोषजनक है और हम उड़ान के लिए आगे जा रहे हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और मौसम विभाग की अनुमति भी प्राप्त की जा चुकी है। मौसम पूरी तरह अनुकूल प्रमोशन के लिए अब हम उड़ान से 17 मिनट की दूरी पर हैं। Minus 17 minutes. Timing to control. Timing confirms external hold mode. Roger, VLCC1, LCC1, please note. Timing confirmed external hold mode. LCC Roger. VLCC Roger. Launch mission. Mission Director Roger. Forwarded to Mission Director. Range is ready for PSLV C56 DSR launch. Mission Director Roger. TTC Director to Mission Director. TTC Director confirms readiness of ISTRAC stations and network for supporting PSLV C56 DSR mission. Mission Director Roger. उपग्रह निदेशक, रेंज CCTC, निदेशक, टेलीमेट्री data ट्रैकिंग एंड loggers are कमांड on it. निदेशक, SHAR-1 and SHAR-2 यान station. निदेशक ने अपने Copied. तंत्रों की जानकारी मिशन निदेशक को दे दी है। Minus 16 minutes. This is Mission Director. Mission Readiness Review and Launch Authorization Board have already given clearance for proceeding with the countdown and launch of PSLV C56 DSR mission. All operations in the countdown sequence till automatic launch sequence have been completed satisfactorily. Based on the clearance obtained from launch vehicle, spacecraft, range, and distract network stations and prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes to initiate launch operation sequence for the launch of PSLV C56 DSR mission at 6:31 hours IST today, that is 30th of July 2023. All stations note. जी हाँ, अभी Mission आपने Director सुना has given authorization for मिशन निदेशक श्री launch. एसआर बीजू ने लॉन्च के ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी करने का Minus अनुमोदन दे 15 दिया है। minutes. Based on the authorization from Mission Director, Vehicle Director hereby authorizes to initiate automatic launch sequence for the launch of PSLV C56 DSR mission at 6:31 hours IST today, 30th July. Automatic launch sequence initiated for PSLV C56 DSR mission. LSA hardcore in auto You've mode. just watched on your screen Mission Director Sri S.R. Biju giving his clearance and authorizing the launch, and the automatic launch sequence will now run, that is T minus 14 minutes onwards from the ground computers to check very important systems of the launch vehicle. Close to the scheduled launch time, the control is passed on to the onboard computers. Speaking about the launch vehicle, PSLV is the workhorse rocket for Isro, having a legacy of Minus Isro's 14 own and minutes. commercial missions PS2 to a variety activation. of Radar orbits. engine. Based on payload weight and orbit, the configuration is adapted as regular, XL, QL, DL, or CA. CA represents core alone or no strap on version of PSLV. It has a gross liftoff mass of 229 tons.
PSLV is a four-stage launch vehicle with alternate solid and liquid stages. The first stage is solid propellant stage called S139 with 139 tons of HTPV-based solid propellant. Second stage has a hypergolic earth storable propellant combination of UH25 and N2O4 with 41 tons propellant loading. Third stage is solid propellant stage having a Kevlar filament wound case with 7.65 tons propellant loading. The fourth stage is a liquid propellant based stage with 1.4 tons propellant. The PSLV stands 44.4 meters tall. PS4 actuation. PSLV C56 DSR मिशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार होगा। पूर्ण संयोजित तथा परीक्षण के पश्चात T0 पर PS1 कोर स्टेज S139 बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। यह चरण करीबन 109 सेकेंड्स तक जलकर 4800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को 50 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 1.4 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्रदान करेगा। इस चरण के दौरान ही प्रथम चरण को पृथक करने के पश्चात द्वितीय चरण का प्रज्वलन PS3 शुरू हो actuation. जाएगा। द्वितीय चरण के -12 दौरान minutes. ऊष्मा कवच यानी पेलोड फेयरिंग को भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण का प्रज्वलन 152 सेकंड तक चलेगा और यान इस चरण के दौरान 169 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 4.23 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर चुका होगा। द्वितीय चरण के पृथकन के 1 सेकंड के पश्चात तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो जाएगा। यह चरण फिर से ठोस नोदक वाला चरण है और इसे उच्च निष्पादन HPS3 मोटर कहा जाता है। यह 120 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करेगा। इस समय यान की ऊंचाई 220 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.24 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। फिर शुरू होता है कोस्टिंग फेज, जिसमें बिना किसी प्रज्वलन के यान प्राप्त संवेग से 115 किलोमीटर की अतिरिक्त RCT ऊंचाई actuation. प्राप्त करेगा और यान की गति में मामूली गिरावट आएगी। फिर यान से तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा। यान इसके 263 सेकंड के पश्चात ही चतुर्थ चरण को प्रज्वलित किया जाएगा। चतुर्थ चरण अंतिम चरण है PSLV का, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें MON और MMH ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यह चरण 272 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर 14.6 किलोन्यूटन के प्रणोद के साथ यान को उद्दिष्ट कक्षा में लेकर जाएगा, जो कि इस मिशन के लिए है 536 किलोमीटर। PS2 actuation prime chain. और इस दौरान गति होगी 7.08 किलोमीटर प्रति सेकंड। DSSAR मुख्य उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाएगा। तत्पश्चात क्रमशः न्यूलियन, ऑर्बिटल स्ट्राइडर, कैलेशिया 2, स्कूप 2, आर्केड और वेलॉक्स AM नामक उपग्रहों को -10 उनकी minutes. कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इतना होने के पश्चात इस यान में चतुर्थ चरण को पुनः प्रज्वलित कर अंतरिक्षीय प्रयोगों में काम लाया जाएगा। We are 9.5 minutes from the scheduled launch time. As we await the launch, let me tell the audience the major flight events that will be taking place in the Control system PSLV actuation sequence C56 completed. DSR mission. This core-alone version of PSLV will inject 7 payloads in a mission lasting 23 minutes. At T0, the core S139 ignites and the launch vehicle lifts off. By 109 seconds, the first stage would have completed its operation and separates from the ongoing launch vehicle. At this instant, the launch vehicle would have reached an altitude of 51 -9 kilometers. minutes. SATVC BPV open. Soon afterwards, the second stage ignites and carries the rocket up to 169 kilometers altitude in its operational time of 152 seconds. During the operation of second stage, the launch vehicle clears the dense atmosphere
So the closed loop guidance is initiated and the payload fairing is separated. The third stage ignites soon after the separation of second stage. After operation of 120 seconds, the PS3 burns out but continues to coast along for another 200 seconds. By this instant, the altitude of the launch vehicle is 335 kilometers. The fourth stage, PS4, together with the payloads, continue to coast for another 263.3 seconds. After the burnout of the third stage, minus coast 8 phase minutes. adds an altitude of 244 kilometers to the launch vehicle, while its relative velocity reduces a little. The fourth stage ignites at 14 minutes into the flight and operates for 272 seconds, during which the orbital conditions are achieved for the ignition of prime satellite DSR and six co passenger satellites. The intended orbit is 6,914 kilometers circular orbit at 5 degrees inclination. The order of separation of other satellites is Neolon, Orbit 12 Strider, followed by Glacia, then the Scoop 2, then Arcade, and finally Velox AM. Thereafter, the upper stage is maneuvered to a lower orbit. minus 7 minutes. अब हम उड़ान से 7 मिनट की दूरी पर हैं। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। यह करीबन 14 मिनट चलता है और इस दौरान पायरो लाइंस को सेफ से आर्म मोड में लाया जाता है तथा सभी संचार तंत्रों की आंतरिक जांच की जाती है। जैसा कि हमने बताया, पीएसएलवी प्रमोचन यान की कुल 57 उड़ानें हो चुकी हैं। यह 58वीं उड़ान होगी। पीएसएलवी की उसकी विश्वसनीयता के कारण इसरो का वर्क हॉर्स भी कहा जाता है। यह विश्वसनीयता सिर्फ All प्रमोचन in यान journal. की नहीं बल्कि उस वैज्ञानिक, तकनीकी तथा व्यवस्था तंत्र की भी है जो हर बार इस मिशन को सफल करने में सक्षम है। minus 6 minutes. PLV close, पीएसएलवी VPV रॉकेट की close. विश्वसनीयता गुणांक 97.6% है। PS2 actuatron. हर एक सफलता के पश्चात इस गुणांक में वृद्धि होती रहती है। External power is withdrawn. Vehicle is fully in the battery power. पीएसएलवी न सिर्फ विश्वसनीय है, यह बहुमुखी भी है। प्रथम चरण के प्रणोदानुसार Flight course and पीएसएलवी loading 4 initiated. मुख्य संरूपण में है: पीएसएलवी एक्सएल, क्यूएल, डीएल तथा सीए, जिसमें क्रमानुसार 6, 4, 2 और 0 स्टेप ऑन मोटर्स Flight संलग्न course and रहते loading हैं। completed. वर्तमान प्रमोचन यान पीएसएलवी C56 सीए कोर अलोन संरूपण वाला यान है। We are close to 5 minus minutes 5 from the minutes. launch. MC confirms As radar a matter data. of fact, the uppermost stage of the rocket usually goes into the same orbit as the satellite the mission injects. The fuel left unused in the stage is vented and the stage is passivated. Passivation is a process of removing stored energy from space vehicle to reduce the risk of high energy release such as explosions or fragmentations. However, the spent stage is an orbital debris itself. The orbital lifetime of the debris is very long in certain orbits. As a responsible space agency, ISRO is carrying out a change in the orbit of fourth stage after the accomplishment of mission. From 536 kilometers altitude, the fourth stage, PS4, will be brought down to about 300 kilometers altitude by firing the orbit minus change 4 minutes. thrusters twice. First firing is scheduled 45 minutes into the flight, and second firing is scheduled 90 minutes into the flight. The re entry into Earth's atmosphere from 300 kilometers altitude is likely to be in the order of weeks or a month.
Though the burns of OCT will be tracked Power by and well ISRO's batteries are ground on. stations, the live transmission will not be available for the viewers. Onboard computers in flight mode. सभी दर्शक प्रतीक्षा में इस प्रमोशन के। अब हम प्रमोशन से 3 मिनट 20 सेकंड की दूरी पर हैं। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू होने के पश्चात रॉकेट पूर्णतः स्वचालित होकर अपना आंतरिक जांच जारी रखता है तथा T0 पर या -3 T minutes. -0.3 सेकंड्स पर सर्वप्रथम RCT का प्रज्वलन हम देखेंगे और तत्पश्चात T0 पर कोर बूस्टर S139 सॉलिड बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। We are 2.5 minutes from the scheduled launch time, and the eagerness building up in the control center here. जैसा कि आपको बताया गया, इस प्रमोशन मिशन में सभी 7 उपग्रहों के प्रमोशन के पश्चात PSLV C56 के चतुर्थ चरण को उसमें लगे ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स को प्रज्वलित कर उसे 536 किलोमीटर की कक्षा से 300 किलोमीटर की कक्षा -2 वृत्ताकार minutes. कक्षा में 2 चरणों में लाया जाएगा। यह प्रयोग भावी मिशन के डी ऑर्बिट सीक्वेंस के तकनीक प्रदर्शन के रूप में किया जा रहा है। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस सुचारू रूप से जारी है। सभी गतिविधियां सामान्य संतोषजनक तरीके से पूर्ण हो रही हैं। अब हम प्रमोशन से 1 मिनट की दूरी पर हैं। -1 minute. -55 seconds. All charts are armed. यान पूरी तरह -50 स्वचालित seconds. है। Sequences are armed. इसमें ऑनबोर्ड -45 कंप्यूटर seconds. आंतरिक जांच द्वारा सभी गतिविधियां -40 निश्चित कर रहे seconds. हैं PSTV और HPP open. T0 पर खुद ही S139 बूस्टर के -30 प्रज्वलन seconds. का कमांड इशू करेगा। -30 seconds. Real-time programs activated. -25 seconds. PSTV HPP open. -20 seconds. -15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. T1 tracking. And we have a liftoff. The PSLV C56 first stage burning bright and the thrust is reported to be normal. जी हाँ, अभी अभी आपने देखा PSLV C56 प्रमोशन यान का Performance normal. सफलतापूर्ण उत्थापन प्रथम प्रमोशन मंच से और प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। यह करीबन 110 सेकंड तक चलेगा। इस दौरान यह 4800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Normal thrust of PS1 stage 4800 kilonewtons. The stage is 20 meters long and 2.8 meters in diameter. इस दौरान रॉकेट अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजर रहा होता है। यह क्षेत्र काफी कठिन होता है एक रॉकेट के लिए।
लेकिन इसमें SITVC और RCT की मदद से रॉकेट Stage को अपनी दिशा performance बनाए रखनी normal. होती है और वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और प्रथम चरण का प्रणोद जारी है। Presently, the launch vehicle trajectory is being tracked by Shah stations. Operational duration for PS1 is 109 seconds. Stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. plus 2 minutes. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे पृथक कर दिया गया है तथा द्वितीय चरण जो कि तरल नोदक वाला विकास इंजन वाला Second चरण है stage इसका performance प्रज्वलन शुरू हो normal. चुका है। We are 2.5 minutes into flight and the rocket is at an altitude of 76 kilometers. The second stage has commenced its operation. It's a liquid stage that has 41 tons of propellant loading. Fuel is 2H25 and oxidizer N2O4. द्वितीय चरण वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न करता हुआ इस चरण के दौरान ही पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया जाएगा तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत चला जाएगा। The legendary Vikas engine powers this stage and generates a maximum thrust of 800 kilonewtons. PS2 stage is 12.8 Payload meters fairing long separated. and 2.8 meters in diameter. In the meantime, the Second rocket stage clears the dense performance atmosphere. normal. It no longer needs to be steered to reduce aerodynamic loads and it can now be guided based on final destination with respect to its current position, marking the beginning of closed loop guidance. No dense atmosphere around, no need to carry the extra weight to protect the satellite. Payload fairing have been jettisoned. ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है तथा यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है जिसमें सेंसर्स की मदद से वर्तमान की स्थिति का पता लगाकर रॉकेट अपनी अभिवृत्ति नियंत्रण तथा उद्देश्य कक्षा की ओर जाता है। PSLV का द्वितीय चरण का Plus निष्पादन 4 जारी है। minutes. Second stage performance normal. यह लगभग 150 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। Second stage separated. Third stage ignited. जहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है कि द्वितीय चरण अपना प्रज्वलन काल समाप्त कर पृथक हो चुका है तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो Third चुका stage है। performance normal. तृतीय चरण HPS-3 के नाम से हम जानते हैं। यह इस चरण में 7.6 टन का प्रणोदक होता है और यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। The third stage has commenced its operation. It is a solid Plus propellant 5 minutes. stage. Current altitude 180 kilometers, ground range around 480 kilometers. Maximum thrust that the stage develops is 250 kilonewtons. It has 7.65 tons propellant loading. जी हाँ, यह ठोस नोदक पर आधारित चरण है जिसे उच्च निष्पादन के लिए बनाया गया है। इस चरण का कार्यकाल लगभग 120 सेकंड का होगा। Third stage performance normal. इस चरण के अंत तक यान 220 किलोमीटर की ऊंचाई तथा सापेक्ष गति 7.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त कर चुका होगा। Plus 6 minutes. Shah station continues to track. Port Blair station has just started to acquire the rocket's position.
Third stage action completed. तृतीय चरण का निष्पादन समाप्त हो चुका है। अब PS3 स्टेज यानी तृतीय चरण और चतुर्थ चरण संयुक्त रूप से यान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम PS3 PS4 कोस्टिंग फेज बोलते हैं। The third stage of PSLV has completed its operation, but it will coast along with the ongoing rocket. In Vehicle the meantime, performance normal. no thrust is being imparted Plus by the 7 minutes. rocket, but the rocket is being steered. Shar and Port Blair stations continue to track. The combined coast phase lasts for 200 seconds or until 9 minutes 42 seconds into flight. As the rocket is not thrusting, its relative velocity reduces. Meanwhile, it gains altitude. PS3 PS4 स्टेज का कोस्टिंग फेज जारी है। इसमें बिना किसी प्रज्वलन के यान प्राप्त संवेग से 115 किलोमीटर की अतिरिक्त ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। यान की गति में कुछ गिरावट आएगी। फिर यान से तृतीय चरण को पृथक कर दिया जाएगा। तृतीय चरण के पृथकन के पश्चात Plus भी 8 minutes. चतुर्थ चरण का कोस्टिंग फेज जारी रहेगा। यह 263 सेकंड तक जारी रहेगा। Vehicle performance normal. अब तक सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन करते हुए सापेक्ष गति 7.17 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 287 किलोमीटर। To put the coasting phase in perspective for the viewers, the first stage carried the rocket till 51 kilometers. Second stage for another 118 kilometers. Third stage, next 51 kilometers, and combined coasting phase will add 118 kilometers altitude. Even after the separation of PS3, which is the next flight event, coasting of fourth stage and payloads continue for Vehicle performance 263 normal. seconds. Brunei Station 2 has started to track. यह मिशन पूर्वी दिशा का मिशन है। इसमें भू स्थित ग्राउंड स्टेशन शार, पोर्ट ब्लेयर, ब्रूने और बयाक हम तक आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। Third stage separated. अभी अभी पुष्टि की गई, तृतीय चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक कर दिया गया है तथा चतुर्थ चरण का कोस्टिंग फेज जारी है। Plus 10 minutes. Vehicle performance normal. यान सामान्य निष्पादन करते हुए अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। यान की गति 7.09 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 354 किलोमीटर। Current altitude 359 kilometers. DSR उपग्रह सिंगापुर सरकार द्वारा ST इंजीनियरिंग द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। इस मिशन से पहले सिंगापुर के लिए PSLV C55 द्वारा TLS-2 का सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है। DSR एक सिंथेटिक अपर्चर रडार लिए हुए है जो कि किसी भी मौसम और किसी भी समय 1 मीटर के रिजोल्यूशन के साथ भूप्रेक्षण में सक्षम होगा। यह सैटेलाइट इमेज सिंगापुर सरकार के विभिन्न विभागों के लिए सहायक होगा। ST इंजीनियरिंग भी इसमें वाणिज्यिक ग्राहकों के लिए इससे मल्टी मॉडल और उच्च
प्रतिक्रियाशीलता इमेजरी का प्रयोग कर अपने उपभोक्ताओं को प्रदान करेगा। Vehicle performance normal. वर्तमान में चतुर्थ फेज का कॉस्टिंग फेज जारी है। Plus 12 minutes. PSLV C56 कुल 7 निर्धार लिए हुए है। इसमें मुख्य उपग्रह सिंगापुर के DSR भूपेक्षण उपग्रह है। अन्य हैं 23.6 kg के आर्केड, 23 kg का वेलॉक्स AM और 13 kg के और 12 स्ट्राइडर। अन्य 3 नैनो सैटेलाइट्स जिनका भार 10 kg से कम है, यह गैलेशिया 2, न्यू लियोन नामक नितभार हैं। इन सभी सहयात्री उपग्रहों को निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाना है। Fourth stage and the payloads currently coasting. Current altitude is 432 Plus kilometers. 13 minutes. Vehicle performance normal. कोस्टिंग फेज के दौरान चतुर्थ चरण में लगे हुए थ्रस्टर्स की मदद से पिच या रोल कंट्रोल किया जाता है। The prime satellite for the mission, DSR, is developed under a partnership between Defence Science and Technology Agency of Government of Singapore and ST Engineering. Once deployed and operational, it will be used to support the satellite imagery requirements of various agencies within the Government of Singapore. ST Engineering will use it for multimodal and high responsiveness imagery and geospatial services for their customers. DSR carries a synthetic aperture radar Plus payload 14 minutes. developed by Israel Aerospace Industries. This satellite can provide all weather day and night Fourth coverage. stage engine started. चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। यह चतुर्थ चरण अंतिम चरण है PSLV का, जो मुख्य उपग्रह और सभी नेतभारों को उनकी उद्दिष्ट कक्षा में लेकर जाएगा तथा Fourth अंतक्षेपित stage करेगा। performance normal. Fourth stage has commenced its operation. Twin engine based pressure fed stage, developing a thrust of 7.4 kilonewtons. वर्तमान में गति 6.94 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 481 किलोमीटर। सर्वप्रथम Plus 15 DSR minutes. मुख्य उपग्रह का अंतक्षेपण किया जाएगा। यह 536 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में होगा। The fourth stage is also provided with reaction control system thrusters for attitude control, and orbit change thrusters will fire post mission to Fourth stage reduce performance altitude normal. of the spent stage to aid in early re-entry. Speaking about this payloads taking ride in this mission, the first satellite to be separated is DSR. This satellite can provide all-weather day and night coverage and capable of imaging at 1 meter resolution at full polarimetry. It weighs 352 kilograms. The second satellite, New Leon, is an acronym for New Space 16 minutes. LoRa-1 Internet of Things Network. It's a 3U nanosatellite developed by New Space. It is a seed satellite for a LEO equatorial constellation providing continuous LoRa-1 IoT services. The third satellite, Orb
12 Strider will carry the Both world's stage first performance multi-modal normal. all-electric propulsion engine featuring subsystems from Singapore-based Elena Orbital Astronautics and Aurora Propulsion Technologies. ऑफ 12 स्ट्राइडर, इसमें यह 13 केजी का उपग्रह है जो एक स्मॉल सैटेलाइट है। plus इस 17 minutes. उपग्रह को भावी पीढ़ी के प्रोपल्शन सिस्टम का तकनीकी प्रदर्शन के रूप में प्रमोशन किया जा रहा है। इसमें पहली बार मल्टी मॉडल ऑल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इंजन का प्रयोग किया जा रहा है और इसमें मल्टी स्टेज इग्निशन, कॉम्पैक्ट हॉल थ्रस्टर्स और आर्म रेजिस्टर जेट्स भी लगे हुए हैं। Fourth satellite is Glacier 2, is an educational 3U nanosatellite by National University of Singapore. Its main mission is to perform an inter-satellite link with Telios 1. गेलियस 2 एक Both 3U साइज stage का एजुकेशनल performance नैनो normal. सैटेलाइट है जिसे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर द्वारा निर्मित किया गया है। इस उपग्रह का प्रमोशन पूर्व में भेजे गए टेलियोस 1 से अंतर उपग्रहीय संचार पथ का निर्माण करना है। यह अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए बहु स्पेक्ट्रमी इमेज लेने में भी सक्षम है। वर्तमान में चतुर्थ चरण प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। कुछ ही क्षणों में उपग्रह के उद्दिष्ट कक्षा की स्थितियां प्राप्त होते ही DSSR उपग्रह को अंतक्षेपित किया जाएगा। The next satellites are Scoop 2, Arcade, and Velox AM. Scoop 2 is a 3U CubeSat designed and developed by a student team of Satellite Research Center, Nanyang Technological Both University, stage thrust Singapore. cutoff. Arcade is a 27U microsatellite. Satellite injection conditions are achieved. उपग्रह के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा चुकी हैं। अब कुछ ही क्षणों में DSR उपग्रह जो कि मुख्य उपग्रह है इसका अंतक्षेपण किया जाएगा। उद्दिष्ट कक्षा है 536 किलोमीटर। 7.1 किलोमीटर प्रति सेकंड। Yes, our satellite separated. और यह हर्ष का पल यहाँ पर इस मिशन के मुख्य उपग्रह DSR को अंतक्षेपित कर दिया गया है और इसके तुरंत बाद ही न्यूलियन भी इस यान से पृथक हो चुका है और अपनी कक्षा में स्थापित किया जा चुका है। The prime satellite for PSLV C56, that is DSR, has been placed in its intended orbit. Thereafter, the second satellite, New Leon, also has been separated. इस घटनाक्रम में अगला है ऑफ 12 स्ट्राइडर उपग्रह का अंतक्षेपण। 5 more injection events awaited. Next in line is Orb 12 Strider. 12 Strider satellite separated. ऑफ 12 स्ट्राइडर उपग्रह को भी अंतक्षेपित कर दिया गया है उद्दिष्ट कक्षा में। We have a confirmation of the separation of Glacier Orb 12 2 satellite Strider, separated. and Glacier 2 satellite also has been separated. ऑफ 12 स्ट्राइडर के पश्चात ग्लेशियर 2 को भी यान से पृथक कर उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है और इस घटनाक्रम में अगला है स्कूप 2 का सेपरेशन। Two satellite separated. यहाँ इसकी पुष्टि कर दी गई है। स्कूप 2 भी अपनी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है।
Scoop 2 satellite has also been separated. It has been confirmed. Two more injection events to go. Arcade and Velox AM. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता है और अब तक सभी गतिविधियां सामान्य हैं। इस घटनाक्रम में अगला आर्केड तथा वेलॉक्स एएम का सेपरेशन हम देखेंगे। Satellite separated. Arcade satellite has been separated. जी हाँ, इसकी पुष्टि कर दी गई है। आर्केड को भी उनकी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। अब अंतिम उपग्रह वेलॉक्स एएम। Arcade carries iodine-based solid propellant propulsion module based on the Hall effect thruster for orbit maintenance during the low altitude mission. It is developed by NTU and in collaboration with Inspire Consortium. Velox AM, the seventh satellite, is a microsatellite weighing 23 kilograms for technology demonstration of AM satellite separated. और वेलॉक्स एएम को भी सफलतापूर्वक उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया। Satellites are separated. PSLV C56 DSR mission accomplished. Handing over to mission director. और इन सभी 7 उपग्रहों के has injected DSR primary satellite and 6 co-passenger satellites into their desired orbit. PSLV C56 DSR mission is fully accomplished. Here we have a successful mission announcement that PSLV C56 DSR mission has been accomplished. As we take leave from you, please continue to stay with us for the address by Chairman Isro Secretary DOS Shri S. Somnath and the mission executives. सभी 7 उपग्रहों को उनके उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपण के पश्चात यह PSLV C56 मिशन पूरा होता है और अब हम आपसे आज्ञा लेते हैं।